Okay, hi, hello everyone. Welcome to today's session of ethical hacking course. So आज के session में we will be discussing footprinting and reconnaissance. Okay, so as we already discussed about 4 to 5 phases of hacking, correct? हमने 4 to 5 phases of hacking जो है वो discuss किया था, like information gathering, scanning, gaining access, maintaining access, covering track, correct? Now, footprinting is the, you can say, first phase where we are gathering information. Okay. So what exactly is footprinting? Okay. So footprinting means ये एक फर्स्ट फेज हुआ एथिकल हैकिंग का जहां हमको इंफॉर्मेशन गैदर करना है. Here we need to gather information in footprinting. So what exactly is footprinting? Now from the name itself it is clear that footprint. Now name से clear हो रहा है कि footprint क्या है. Now I guess you must have seen some detective movies, correct? How many of you have seen Discovery shows, Net Geographic shows? Anyone? Where people try to track animals. So how they do this? Basically, how they tell which animal it is, how they tell what is the age of the animal, with the help of footprint only. They can track the footprint. They can tell which animal it is, and they can simply find out that particular animal, right? Because of footprint. So footprint is a kind of, you can say, yeah, you can say evidence with the help of which we can find details about our target. That is footprint. Okay. So in this module, we will be discussing about various ways of finding out information about our target. Okay. For that, first thing we'll discuss about is footprinting through search engines or Google hacking techniques. Now, the most powerful tool is a search engine. हम लोग search engine के help से, for example, Google, Bing, we can find lots of information. That is a kind of research. After that, we will be doing footprinting through social networking sites. Okay. After that, we will be doing footprinting of website. Footprinting means gathering information about the website, like technology and different details. Okay. We can just merge it here. Social engineering also will do. Social engineering. And discuss about tools
for footprinting. Okay, so these four things we will be discussing in footprinting. Okay, so first let's start with the help of search engine. Okay, now let me open this. So here, if you want to find information about someone, अगर आपको किसी के बारे में information जानना है, तो you can directly search about that information here, right? So एक और advanced technique है, with the help of which we can just use Google hacking techniques to find very deep information. Google hacking techniques. So here you will be getting special payloads to perform a search. अब पेलोड क्या होता है? तो अगर हमको कुछ बहुत ही ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि एग्जैक्ट वही चीज दे जो कि हमको चाहिए, लाइक अगर हम कुछ अभी सर्च करते हैं, इफ यू सर्च समथिंग राइट नाउ, लाइक पेट्रोल न्यूज इंडिया, न्यूज इंडिया, सो ये गूगल हमको वेरियस वेबसाइट्स के न्यूज देगा, राइट? लाइक इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, इंडिया टाइम्स, एनडीटीवी. बट अगर हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिक वेबसाइट पे, लाइक इफ वी वांट टू फाइंड this particular information on only one website, how can we do that? For that we have these Google Docs. This is known as Google Docs, जो कि Google सर्च को और एडवांस बनाता है. कैशे, all in text, all in title, all in URL, file type, in URL, in URL admin, okay, in title, in anchor, in text, site. This is known as Google Hacking Database, GHDB. Okay, in here you can see all the latest kind of available docs. यानी कि इनमें से किसी चीज को अगर आप सर्च करोगे, you will be getting very specific information about a vulnerability. Okay, like in title index of in text resource, like this. So let me show you one example here. Petrol News India site, indiatimes.com. Now just check here. Just now I searched Petrol News in India. Now you can see all the website domain here. Everyone, India Times के अलावा कोई और वेबसाइट दिख रहा है आपको? Are you able to see any other website apart from India Times? No, only India Times is visible here. Why? Because I used a Google Doc here, which is site. Site means that only search for this information in this website, India Times. तो बहुत बार ऐसा होता है कि we need to gather some information which we know that will be available on a specific website, but हमको बहुत से results मिल जाते हैं and time waste हो जाता है. And to solve this issue, we need to use this particular Google Docs. ठीक है? For example, in URL, suppose in URL usernames. ठीक है? I want to search websites who are having this as a folder name. This is not working. In URL, just wait.
Okay, sorry. So suppose, let's say example from here. In URL, we don't have any okay, yeah, here. Suppose I want to search some login pages. Okay. So how to find a login page? Any one of you? कोई आइडिया है कि लॉगिन पेज का यूआरएल कैसा होता है? जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उसके लॉगिन पेज का यूआरएल कैसा दिखता है? लाइक हाउ द लिंक लुक्स लाइक ऑफ लॉगिन पेजेस. login.php, admin.php, login.html, राइट? ऐसा ही होता होगा. So suppose कि हम किसी का लॉगिन पेज ढूंढना चाहते हैं. We want to look for some login pages. So what we can do is in URL login.php, like this we can search. Now you can see you will be getting the results of only admin logins. जितने भी admin login pages हैं, you will be getting results of those only. So ये एक admin login है, ये किसी स्कूल का है. This is also a login. This is also a login. Okay. Now obviously पहला स्टेप होता है लॉगिन पेजेस को पता लगाना, हिडन इंफॉर्मेशन पता लगाना. उसके बाद जो भी वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइटेशंस होते हैं, वहां पे हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं. फर्स्ट वी नीड टू गैदर इंफॉर्मेशन, राइट? So this way we can get the login pages. Not even the login, admin.php also we can search and we'll be able to get the admin pages. Or we can also search for dashboard.php. We can also get some dashboards. Welcome to admin panel. So you can see like this. PHP is a language, okay? Like HTML, PHP is also a language on which websites are built. Okay, vidyadan.net, vidyadan.net. Okay, you can see one admin page here. Okay, so like this we can look for specific pages of a website with the help of this in URL. And like this we are having lots of Google docs available, in URL, site, cache, that I will share with you all in the drive link, the drive only. I will upload a particular file with all the Google docs which you can use. So let's take example from exploitdb.com. What is exploitdb.com? Exploitdb.com is a database of latest exploits. जितने भी latest exploits होते हैं, उसका यहाँ पे update हमको मिल जाता है latest. जैसे this is of November 19th, few days back only. So let's try this. What is CSV? Anyone? .csv? CSV क्या है? I hope this is known to every one of you. Yes, Excel file का एक format है. So ये command, ये Google Doc क्या करेगा? Anyone? What this Google Doc will do? This Google Doc will look for website having extension gov, यानी government. Dot और टाइटल में इंडेक्स ऑफ .csv आना चाहिए. मतलब कि सर्वर पे एक फाइल जिसका भी सेव होगा, जो कि सिक्योर नहीं होगा, उसका लिस्ट हमको मिल जाएगा CSV फाइल्स का. तो एक हमको ये मिला government.au, आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया का है. तो सर्वर पे जब वेबसाइट्स फाइल्स सेव मतलब सिक्योर नहीं किए हुए रहते हैं, तो ये इश्यूज आते हैं. जैसे कि एक ये हमको मिला ओपन फाइल है, ओल्ड डीलिंग, फाइल्स के फोल्डर्स के नेम्स हैं, और ये एक फाइल हो गया. अब ये इंफॉर्मेशन क्या काम आएगा वो डिपेंड करता है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो. ओके, सो वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी किसी और का एग्जांपल देखा जाए. इंडेक्स ऑफ दिस. ओके, इसमें कुछ नहीं है. So basically we can use more stuff here like gov.india, gov.pk. Okay, so like this
no, we cannot mix two docs. Just understand index of CSV, ये ना सर्वर का एक डिफॉल्ट नाम है, सर्वर का एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है किसी चीज को दिखाने का. तो इंडेक्स ऑफ CSV मतलब उस CSV फोल्डर के अंदर के चीजों को दिखाना, इंडेक्स ऑफ CSV. सो अगर तुमको CSV चाहिए तो CSV लिखना होगा, कॉमा दे के ऐसा नहीं हो पाएगा. सो इफ यू वांट PDF, you can get PDF only. Okay, like this. तो ये PDFs मिल गए हमको, ओपन है, कोई सिक्योरिटी नहीं है. जो भी है ठीक है. अगर हमको चाहिए डॉट SQL एग्जांपल लेते हैं, तो एक ये हमको मिला इंडेक्स ऑफ SQL. तो ये देख लो, SQL फाइल है ये, जो डेटाबेस हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट SQL? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. Yes, so we can see the SQL also. Okay, let's check something else. TXT. So here we are with some TXT data, text files. No, this is not having access denied. So here we are having some. Okay, so here we can see all the files and folders here. PHP files also we can see. We can even download these files if you want to. This is no, we cannot download this, but yeah, we can see this internal files. So किसी server पे internal files visible होना is not a good thing, right? अगर आपने कोई वेबसाइट डेवलप किया है, क्या आप चाहोगे कि आपका कोड किसी और को विजिबल हो? बैक एंड कोड, फ्रंट एंड कोड तो कोई भी देख सकता है, HTML के कुछ हो गए, CSS से कुछ हो गए, बट व्हाट अबाउट द बैक एंड कोड्स लाइक योर एल्गोरिदम्स, योर SQL क्वेरीज, योर डेटाबेस डिटेल्स? सो बहुत से डेवलपर्स होते हैं जो कि इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, और दे जस्ट लीव दिस काइंड ऑफ स्टफ्स एज ओपन. उनको भी पता नहीं होता है कि ओपन है. एंड हाउ पीपल फाइंड इट? गूगल इन सब चीजों को क्रॉल नहीं करता है. लाइक जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, गूगल बाय डिफॉल्ट नहीं करता है, हम गूगल को फोर्सफुली वो करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेशल गूगल डॉक्स. ठीक है. सो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Okay, how many of you know about intranet? Anyone? इंट्रानेट के बारे में किनको किनको पता है? क्या है इंट्रानेट? नॉट इंटरनेट, इंट्रानेट. Okay, so intranet, yeah, intranet is a kind of local network having restricted access. ठीक है. जैसे कि बैंक में कभी आप गए हो तो आप देखते हो बड़े बड़े CPUs लगे रहते हैं. कभी आपने किसी बैंक में एंट्री लिया होगा तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े CPUs लगे रहते हैं, राइट? सो वो क्या होते हैं? वो बेसिकली एक सर्वर ही होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है. लाइक दे ऑल आर सर्वर्स, दे आर आल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट, but you all cannot access outside the bank. You need to be inside the bank, in the bank network to access those. ठीक है. और बैंक्स वाईफाई यूज नहीं करते हैं, they use Ethernet cables. So intranet is a local or restricted communication network, a kind of private network. So companies भी इसको यूज करती हैं. If you are an employee and if you are working from home and if you are able to use your company's resources on a particular software, that is also intranet. Okay. So ये कंडीशन क्या हुआ कि यहाँ पे हम इसके हेल्प से ये पता लगा रहे हैं कोई इंट्रानेट का लॉगिन पेज अवेलेबल है कि नहीं इंटरनेट पे. तो ये एक IP एड्रेस हमको मिला, एक लॉगिन पेज. वी कैन सी अ लॉगिन पेज हियर. लेट दिस ओपन. यस, इंट्रानेट. लुक, इंट्रानेट के अब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं. some people, some companies configure an intranet
that we can only use with the help of VPN. Some don't need VPN, so it depends. That's a separate thing. It's all depend on the configuration. So you can see one internet is here, one is here, इंटरनेट का लॉगिन पेज, या ठीक है. So ये रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स. So basically this is a network which allows access to internal stuff of an organization. Northern Eastern Catholic District School Board, okay, like this. And let us try one more thing: DB password, file type, environment. You can try these Google Docs from exploit DB. You can get various details. So we can see one environment file here, username, password. So एक ये वेबसाइट है जिसका डेटाबेस का यूजरनेम पासवर्ड हमको यहाँ दिख जा रहा है. So what is env file? env file के बारे में जानने के लिए you need to first of all understand what is Laravel. How many of you know about Laravel? Anyone? No? Okay. So सबसे पहले तो PHP के बारे में जानना जरूरी है. I hope you know about PHP language, correct? Everyone? Yes, no? So PHP एक बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है. PHP पे वेबसाइट बनाने के लिए, if you want to develop a website on PHP, we need a framework, ठीक है. बेसिक PHP पे आजकल कोई वेबसाइट नहीं बनाता है. PHP is a programming language, everyone. Just like HTML, CSS, they are static languages. PHP is a server side language, ठीक है. बैकएंड कोडिंग के लिए PHP यूज किया जाता है, जावा टाइप. सो PHP पे हम लोग बेसिकली कोडिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, ओके. तो PHP फ्रेमवर्क्स अगर हम सर्च करें तो उसमें गिने चुने फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे कि Laravel सबसे हाईएस्ट नंबर पे है. ऑलमोस्ट 60 to 70% PHP applications are built on Laravel. Then CodeIgniter, Symfony, Cake PHP, Falcon, Fuel PHP. तो ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क हैं जिसमें Laravel बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए, ओके. अब Laravel और CodeIgniter जैसे जो फ्रेमवर्क्स हैं उसमें एक फाइल होता है जिसका नाम है .env. env का फुल फॉर्म environment, okay. Environment file contains all the information about the project, okay. Environment file में सारे प्रोजेक्ट्स के बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं कि डेटाबेस का डिटेल्स क्या है, सर्वर का डिटेल्स क्या है, AWS एक्सेस की, यू कैन सी. सो ये एक प्रोजेक्ट होगा. आई डोंट नो क्या प्रोजेक्ट है ये. लेट अस ओपन दिस. So when I open this IP address, it is showing as forbidden. अगर हम सी पैनल ओपन करें तो नॉट फाउंड. ओके, विल सी लेटर ऑन. सो यहाँ पे इन्वायरमेंट फाइल में हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गया है कि इसके डेटाबेस के डिटेल्स हैं. अब डेटाबेस का लिंक क्या है लॉगिन करने के लिए, वो एक अलग चीज है, उस पर एक अलग टाइम देना पड़ता है फाइंड करने के लिए कहाँ है कैसे है. बट दिस इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू फाइंड आउट, राइट. ऐसे ही बहुत सारे और एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे हम चाहे तो पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये एक हो गया. तो ये तो ओपन नहीं हो पा रहा है, ओके. ट्रैवल, ओके. तो यहाँ पे एक और मिला हमको, ये एक Laravel प्रोजेक्ट ही है. अगर इसको हम ओपन करें तो ये तो एरर्स आ रहे हैं, ऐसे भी पासवर्ड्स रॉन्ग है इसीलिए, नो वरीज. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे पासवर्ड्स हैं, डिटेल्स हैं जो हमको मिल चुके. तो ये कुछ तरीके हो गए गूगल हैकिंग टेक्निक्स के, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू. गूगल हैकिंग टेक्निक्स, गूगल डॉक्स के हेल्प से
इंटरनल इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं. तो यू कैन ट्राई दिस वन. ओके, नाउ proceeding to the next one, that is footprinting through social networking sites and social engineering. Okay, now how many of you can find out details about someone from social media websites? Anyone? How many of you can find out some information about someone from social media website? Any kind of information, basics, advanced. Okay, so yes, let's take example of Facebook. So on Facebook, basically, yeah, we know like people secure their profiles, hide their informations, and lots of different securities there. But what about those who don't know these things? Like, who are targets? टारगेट वही है ना जिनको ये सब मालूम नहीं है. आपके फ्रेंड लिस्ट में अगर सबने प्रोफाइल हाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ग्लोब में लोगों को पता है कि ये क्या है क्या नहीं. पीपल those people who know about these things, they are secure. They know how to protect themselves, but only on social media. उनको सोशल मीडिया पे ये बस एक फीचर का चल गया पता, वो लोग सिक्योर कर लेंगे. What about others? Right? Yeah, people are not aware. So let me give you one task. Every one of you here use Facebook? Yes, no? Okay, so I will be giving you a name of a person. Okay, मैं आपको एक पर्सन का नेम दूंगा. You need to search that person on Facebook, and you need to tell me details about himself, like her wife name, her daughter name, or whatever I will ask. Okay, so you can open your Facebook. Okay, and I will be giving you 10 minutes to search for that. Okay, so let me type the name here. Okay, so 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं. अब तो 10:38. उसके बीच में आपको बताना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं पूछूंगा अभी यहाँ पे, तो उस पर्सन का नाम है. ये प्रैक्टिकल है, मतलब ये कुछ किसी के पर्सनल चीजों में नहीं जा रहे हैं हम लोग. ये एक कोर्स में ही हम लोग का एक ये प्रोजेक्ट है. ठीक है, स्वप्निल सावंत, ये उस पर्सन का नाम है. एंड टू क्लैरिफाई मोर, ही इज वर्किंग इन लक्ष्यम हेल्थ लिविंग. Everyone search this person and tell me his wife name. You have 10 minutes. स्वप्निल सावंत इन लक्ष्यम हेल्थ लिविंग. और ये चीज आप प्राइवेट चैट में बोलना मेरे को. डायरेक्ट मैसेज मत बोलना. सॉरी, शेयर्ड मैसेज मत बोलना. ये प्राइवेट मैसेज में बोलना मेरे को. Find out his wife name and send me a direct chat if you find out the details. ठीक है.
Anyone? Any luck? Those who are getting it, send me a direct message. Okay? डायरेक्ट मैसेज करके मेरे को जूम में सेलेक्ट करके मेरे को मैसेज करना डायरेक्ट. डोंट शेयर इन चैट बिकॉज अदर्स आर आल्सो सर्चिंग. सो टेल मी द नेम इन डायरेक्ट मैसेज. जो नेम है वो डायरेक्ट मैसेज में आप बताओ. जिसको मिल जाएगा वो डायरेक्ट मैसेज मेरे को बता सकता है कि ये नाम है. मैं सिर्फ उसके वाइफ का नाम पूछा, मैंने कहाँ रहता है ये सब नहीं. डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोज इंफॉर्मेशन, जस्ट फाइंड अबाउट हर वाइफ नेम. उसके वाइफ का क्या नाम है, जस्ट फाइंड दैट एंड send me a direct message. Okay, I got one response, Harsh, from Harsha. No, Harsha, that is wrong. Okay, I got 2 or 3 of more details. From that, only one person is correct. Kirti, no, not Kirti. Sangeeta, no. Only one person got correct answer. Yes. Search for that. You have a good amount of time left. This practical will show you that how uh, you can gather information about someone from social media and how a person can be careless like that. Like we know we all are search we all upload our pics on internet, Instagram, Facebook, right? For finding out different information, for sharing our daily basis of updates regarding our life. हमको पता नहीं होता है कि उसी बीच हम लोग बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसे हम लोग जो है वो शेयर करते हैं, राइट? Okay, yeah. So yeah, the correct answer is Rashmi. Okay, the correct answer here is Rashmi. So let's see how did we get that information. Okay, just wait for a moment. Let me connect over Facebook. Just wait for a moment. So everyone, I hope you are able to see the screen of my this Facebook profile, correct? Let me know. Yes. So here, first of all, I told you Swapnil Sawant. So this is Swapnil Sawant. So basically, you are getting 2 or 3 more results. But I told you he's working in Lakshyam Health Living. So that's also okay. Now, let's start going through his photos. Okay? हम photos browse करते हैं. So this is a pic. So we know Swapnil.
We go through some comments. Nothing here. Next pick, same. Nothing here also. We are able to see that his daughter and his wife is here. That's okay. We can see who commented, but it's not sure that who are these people because face is not matching. Nothing here. Swapnil. So it's clear that Swapnil, he is a Swapnil only because it's a male name. वो तो clear है कि Swapnil यही है. Then she is her daughter. So it's clear she is her daughter. Okay. But still we are not able to see any comments regarding her daughter. Not here. Nothing here. So here we can see that happy birthday Sanvi. So it's clear that this is his daughter and her name is Sanvi, and people also commented that happy birthday to you Sanvi, happy birthday. So we are able to get the name of two person, like one is Swapnil, by default we know, other Sanvi. Okay, scrolling through more photos, so we know he's Swapnil, she's Sanvi, and third one we don't know. She is his wife. So nice family. How I'm clear that she is his wife? Because someone commented nice family. So of course it's a family pic. So father, daughter, and wife, mother. Again same pic. And here we see one more pic. So let's scroll. So some person here commented, great pic, Sanvi, Rashmi, and Swapnil. So we know who is Sanvi, we know who is Swapnil. So the third person obviously will be Rashmi. Okay. So from this it is clear that his wife name is Rashmi. Okay. So this is how people look for information. Like this is a very, very basic example. It's just 1 or 2% of what hackers do on social media to gather information about someone. Okay. This is only 1%. There are lots of different ways we can track someone and gather as much as possible information with the help of social media. Okay. This is how we do social media footprinting. So footprinting only includes these much of steps to find out various information. So I hope कि social engineering का concept आपको clear होगा कि कैसे social media websites के help से information जो है gather किया जाता है. अब LinkedIn कितने लोग use करते हैं यहाँ पे? Okay. So LinkedIn एक प्रोफेशनल नेटवर्क है. सोशल मीडिया तो नहीं, मतलब कह सकते हैं सोशल मीडिया ही है, बट एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है जहां पे प्रोफेशनल्स के ग्रुप्स रहते हैं एंड दे शेयर स्टफ related to business only, opportunities, jobs, right? I'm sharing one thing in group. I have shared my LinkedIn profile in the channel also. Okay. So अब LinkedIn पे कैसे हम लोग सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं? So LinkedIn एक तरह से बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है where we can get lots of information about someone who is looking for job. Is it correct? How many of you share your phone number, email address, your personal details in your resume? Anyone? आप में से कितने लोग रेज्यूमे जब बनाते हैं उसमें फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना खुद के घर का एड्रेस, अपने बारे में आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी चीज शेयर करते हैं? एवरीवन, क्योंकि वो रेज्यूमे में होना चाहिए. अच्छा, अगर मैं एक एबीसी कंपनी के नाम से naukri.com या लिंक्डइन, monster.com पे एक रिक्रूटर का प्रोफाइल बनाऊं और आपसे आपका रेज्यूमे मांगू, उस समय क्या होगा? If I create a company on naukri.com and if I start hiring some people from India
on different designations, obviously you will share your resumes, correct? आप नहीं भी शेयर करो तो आपने naukri.com या कहीं ना कहीं वेबसाइट पे तो बाय डिफॉल्ट अपलोड किया ही होगा, वो मुझे ऑब्वियसली मिलेगा डायरेक्ट। सो इससे मतलब नहीं है कि रिक्रूटर कौन है, भले ही मेरा वो फेक कंपनी हो या रजिस्टर्ड कंपनी हो, आई गेट ऑल योर इन्फॉर्मेशन। और खुद से ये सारे इन्फॉर्मेशन कोई कहीं शेयर नहीं करता सिवाय रेज्यूमे के। सो ये भी कुछ तरीके हैं कि कैसे आजकल आपके डेटा को बेचा जाता है। पीपल, रिक्रूटर्स सेल योर डेटा फॉर मनी बिकॉज इन योर रेज्यूमे दे हैव ऑल योर इन्फॉर्मेशन, आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपके फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस। और आप फोन नंबर गलत डालोगे भी नहीं रेज्यूमे में। आप भले अपने फेसबुक अकाउंट में गलत नंबर डाल दो, बट क्या आप अपने रेज्यूमे में गलत नंबर डालोगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यू विल बी एक्सपेक्टिंग कॉल फ्रॉम सम रिक्रूटर्स। दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ओके, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस, ये कुछ नया नहीं है, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। नाउ let's have a look on third one, website footprinting, okay? So how we can do website footprinting? Let's see. Suppose कि मैं ABC वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, आई वांट टू गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट ABC वेबसाइट, और जस्ट टेल मी एनी वेबसाइट नेम इन द लाइव चैट। कोई वेबसाइट का नेम बताओ मुझे जिसके बारे में आपको जानना है कुछ इंफॉर्मेशन फुटप्रिंटिंग के। कुछ ऐसे वेबसाइट्स के नाम बताओ जो कि इतने बड़े टेक जाइंट्स नहीं है, ओके। ओके, वॉलमार्ट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वॉलमार्ट, सो वॉलमार्ट का वेबसाइट पहले देख लेते हैं। वॉलमार्ट, हाँ, सो यही है वॉलमार्ट का वेबसाइट, ओके। नाउ आई वांट टू नो some basic information about this website. So first what we can do, we can get this website IP address, and how to get that? So basically हम टर्मिनल के हेल्प से IP एड्रेस पता लगा सकते हैं, that is known to every one of you, the ping command, right? ping command के हेल्प से IP एड्रेस तो ऐसे ही पता लगा जाता है, लेकिन ये walmart.com, ये एक तरीका हो गया IP एड्रेस पता लगाने का, ओके। ये कुछ इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मे बी मेरे टर्मिनल में कुछ इशू है, नो वरीज। ये एक तरीका हो गया पिंग कमांड की हेल्प से IP एड्रेस पता लगाने का, एंड द अदर इज dnschecker.org, okay. What is DNS? Anyone? DNS stands for domain name system, okay. जब भी कोई वेबसाइट्स ऑनलाइन होस्ट होते हैं तो उसके लिए एक डोमेन नेम का जरूरत पड़ता है, करेक्ट? क्यों? एक्चुअल में तो वेबसाइट का एड्रेस IP एड्रेस होता है, बट हमको डोमेन नेम का जरूरत क्यों पड़ता है? एनीवन? Why do we need domain names? Because we cannot remember IP addresses. हम लोग IP एड्रेस याद नहीं कर सकते हर वेबसाइट का, इसलिए हमको डोमेन नेम चाहिए होता है, ठीक है। अब डोमेन नेम का जो एड्रेस है वो एक IP एड्रेस पे पॉइंट होता है अलग अलग सर्विसेज के लिए।
जब यूजर्स के ट्रैफिक आते हैं तो। ओके, इन सारे चीजों को हैंडल करने के लिए डीएनएस का जरूरत होता है। अलग अलग सर्विसेज को हैंडल करने के लिए एक डीएनएस का जरूरत होता है, नोन एज डोमेन नेम सिस्टम। अब हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ वॉलमार्ट का करना सर्च, तो वॉलमार्ट का मैं डीएनएस रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। और डीएनएस रिकॉर्ड्स अलग अलग होते हैं, ए रिकॉर्ड, डब्ल्यू रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड में आपको मिलेगा आईपी एड्रेस, डब्ल्यू मिलेगा आपको IPv6 एड्रेस, सी नेम, एमएक्स रिकॉर्ड में आएगा मेल रिकॉर्ड, एनएस में आएगा नेम सर्वर एंड सो ऑन। तो ए रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो ए रिकॉर्ड में हमको मालूम चला कि ये दो इसके आईपी एड्रेसेस हैं, 161.170.230.170 और एक 161.170.232.170। तो ये वॉलमार्ट के दो आईपी एड्रेसेस हैं जो कि हर जगह रिजॉल्व हो रहे हैं, यानी कि किसी भी कंट्री में ये डाउन नहीं है। ठीक है, ये हो गया ए रिकॉर्ड। तो ए रिकॉर्ड की हेल्प से हमको उसके आईपी एड्रेस मिल गए। डब्ल्यू रिकॉर्ड क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का दो वर्जन होता है, IPv4, IPv6। IPv6 जो है वो ज्यादा मेमोरी लेता है, मतलब वो कुछ ज्यादा ही सिक्योर होता है, कैसे आप कह सकते हो। तो डब्ल्यू रिकॉर्ड इसका कुछ है ही नहीं, यानी कि वॉलमार्ट का IPv6 एड्रेस नहीं है, सीनियम रिकॉर्ड भी नहीं है, मेल रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो ये है वॉलमार्ट का मेल सर्वर। ठीक है, अब मेल सर्वर, ये जो सारे के सारे डिटेल्स है ना, ये अभी तो कहीं यूज नहीं आएंगे, बट वी आर डूइंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सो वी नीड टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन समवेयर, राइट? दिस इज अ मेल सर्वर एंड वी गॉट द इंफॉर्मेशन नाउ। उसी की तरह नेम सर्वर इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस इज अ नेम सर्वर इंफॉर्मेशन। What is a name server? Now, Walmart is getting hosted on a particular server, and this is the detail of the server. Okay, such as the example of Netflix.com. ठीक है, Netflix, ये Netflix के name server के details हैं. This is the details of a Netflix name server. So any one of you can tell me that from this name server details, any information you were able to find out? कोई क्ल्यू मिला क्या आपको इसमें कि कोई इंफॉर्मेशन का? एनीवन, एनी क्ल्यू? This is Netflix.com name server information. Yeah, we got to know that where the site is hosted, but where it is hosted exactly? Anyone can tell me from this name server information? Yes, it is cloud based. Yes, AWS cloud. So AWS is an Amazon Web Service provider, right? And Netflix is hosted on AWS. That is absolutely correct. So this is what we are expecting from DNS footprinting. हमको यही information पता लगाना है, okay? Just like that, we have a TXT record. So in the TXT record also we can find out that Netflix is having Dropbox integration, Apple integration, DocuSign, Miro, Facebook, Google, Zapier, Amazon. So this is what we look in DNS, in domain name system footprinting. So this is one more thing. Next, what if you want to find out the technology on which the website is built? Suppose there's a website known as built with, okay, and I want to know on which technology Walmart is built on. So walmart.com. Now we can see all the technological profile of Walmart. This is what exactly we need. आपकी वेबसाइट कौन से टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, ये एक मेन चीज होता है पता लगाना, and that is what we are able to find out here. For analytics and tracking, Walmart is using these services: Adobe, Visual IQ, Google Analytics, Facebook Domain Insight, Facebook Pixel, Yahoo Dot, Facebook Conversion Tracking. Okay, and they're using some widgets like Facebook Like button. Okay, Workplace by Facebook, Google Tag Manager, COVID-19 usage statistics. They're using frameworks like Adobe, Java, and PHP, which means they are also using PHP language in their website. Okay, content delivery network.
cloud front, mobile, payments, mapping, Google Maps. For payment, they're using American Express, MasterCard, Visa, JavaScript and libraries, advertising, shipping providers, email hostings, name servers, web hosting, this SSL certificate, web server is Apache, operating system. So all this information, you might not be knowing about most of the information, that what is actually Envoy, Apache and all. I will explain later on. But this is how we gather information about the technological profile of a website. Just like that, you can check about Netflix. Okay. Obviously, you cannot check about Facebook and Google because they use technologies who try to show wrong information. Let me show you this. If I search facebook.com, you will get a warning, misleading technological profile warning. Because Facebook used some technology which is used to mislead the users from finding out the exact technology on which they are built on. So you won't be able to see anything exactly on this particular page. So we can check websites like Netflix and different other informations with the help of this particular built with website. Okay, so this is about website footprinting. Okay, now what we'll do is in the next class we'll discuss about the softwares and tools which we can use in footprinting, and from there a kind of guidelines I will be giving you on how to use the tools and what exactly you need as a system configuration so that you can use the tools. Okay, so that's it for today's session, everyone. You can now leave the session. The recording will be uploaded as soon as possible. Okay, and if you want to ask any question, you can also connect with me on LinkedIn. I have shared my profile there. You can also direct message me there, or I have already shared my Instagram profile with you all. Okay, for any queries. Anyhow, we'll be having 15 to 20 minutes of query sessions in our next class. There you can ask your doubts in the live session itself. But right now, as we are doing basics, so that is not that much of Q&As we'll be doing right now. Okay. So thank you for joining this session, everyone. You can now leave the class and have a good day ahead. Bye-bye, everyone.